Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Arya Wahid and you are on the channel of Medicare. So in this video we are going to start a new chapter of dosage form, and this chapter is about the ophthalmic preparations. So whenever you will use the word ophthalmic, it always related to the eyes. So these are preparations, or these are the drugs which are applied to the eye surface or in the surrounding tissues of the eye. So these are called as ophthalmic preparations. So what are the characteristics of it? So they are used to provide the local action directly on your eye. There are some drugs which are indirectly acting on the eye, but if you give a eye drop, a eye lotion, so you are giving a local action directly on that surface. So some characteristics of ophthalmic solution are they should be sterile, mean they have no microbial content in them. They should be isotonic to your body, means that their osmotic pressure will be equal to the osmotic pressure of your eye. Their pH balance is very important, like your pH of the tears is 7.4, so they should balance that. So if they not balance that, they will cause the irritation. So therefore we should not prepare any solution which cause the irritation into eyes. So therefore these all the parameters are so important that we should keep them in the mind, and then we have to prepare them. They are slightly acidic and they should be discarded after the 20 to 30 days. So this is the common practice that we should not. We are using the eye drops for many years and years, and we kept them into the refrigerator, but they are not safe. Some are safe, like rose water is going to be saved, but some eye drops or some eye lotions, they cannot survive for a long time. So you should not use them for 1 year and for a long time period. So you should discard them because they can cause irritation or some kind of allergy into your eyes, or so therefore you should not use them. So there are many types of organic preparations, that on the base of their nature, that what kind of nature they have. Like some ophthalmic solution are in the form of solutions, mean aqueous in form. Some are in the form of suspension. Suspension mean they have some particles dispersed in the water, mean in the suspension the drug is not soluble into water. There are some ointment which are fat or waxy like nature, which are just like a lotion. Okay, so we can call them as eye lotion. So ophthalmic solutions are called eye drops and they are called eye solutions. And ophthalmic inserts are also used. They have solid or semi solid like nature. Or some contact lens solution they also place in the ophthalmic preparation. Contact lens solution, you know very well that these are the solutions which are used to cap the contact lens very well, or in and there are two types of contact lens solution. We will discuss them. So the first ophthalmic preparation is the ophthalmic solutions. So what are them? They are used for the cleaning or rising of your eyeball. Just they are used to wash your eye. So some characteristics are here. They should be sterilized, aqueous form. They should be non-irritant, non-toxic. They should have no microbes in them. So that's very important. That ophthalmic preparation, they should not contain any microbe. Just like as we are preparing the injections, they also don't contain any microbe, and we have take care of them so that they should not get degraded. They should be isotonic to your body. They should be buffered, means pH balance honi chahiye, and free of foreign particles or microbes. So let's discuss about the uses of ophthalmic solutions. So here I have written the uses. They are used for the antiseptic, anti-inflammatory, anesthetic, means sometimes anesthesia देने के लिए भी use होते हैं, and they are also have mydrotic or mitotic property. Mydrotic means these are some drugs which are used to dilate your pupil, and some drugs are mitotic property, mean they are used to constrict your pupil. So that's very important, because when we are performing a eye surgery, we need that our eye should be contracted, our eye pupil should be contracted. So therefore these drugs are given in the form of eye drops so that we can perform the surgery.
and the container used for the eye drops is some glass or plastic like a betonnier sole eye drops. Advantage is it is to use, easy to handle, rapid onset because of the local action, and have less side effects. Disadvantage is that it has short duration, that aqueous suspension aqueous ophthalmic solutions are not for the long duration, and there is a chance of loss of medicament, like when you blink your eye doesn't have the capacity to hold a lot of the aqueous liquid, so therefore there is a chances that your medicament should be lost out. So this is the disadvantage of ophthalmic solutions. Now let's discuss the other type of ophthalmic preparation, which is the ophthalmic suspension. So as the word indicates, suspension contain the finely divided particles. So now the drug particles are dispersed into the vehicle, because drug is insoluble in water, so we cannot give them in the form of solution. Characteristics is just same as we have discussed the characteristic of ophthalmic solution. Just the difference is that the particles which are of the drug should be of less size, should have be distributed uniformly, and should have homogeneous dispersion, and uses is just like the same, container is just same. Okay, so same thing you have to write again and again. So now let's discuss the example of ophthalmic suspension, like dexamethasone or hydrocortisone. They are the very good example of ophthalmic solutions which are used in the common practice. So what are the advantage of a suspension? They have long duration because as we have discussed earlier, they have the particles disperses into any vehicle, so they stay in the eye for a long duration. But disadvantage is that they can cause irritation to you, because the particles which are present in the suspension, they can settle down or they can coagulate to form a large particles, which when put into the eye, they can cause the coagulation or they can cause the irritation to your eye. So therefore this is the great disadvantage of it. Next ophthalmic preparation is the ointment. Ointment are the semi-solid preparations, like the lotion. So they can also be called as a eye lotion. Characteristics is same, just as we have discussed here. Just the viscosity is very good होनी चाहिए. ऑइंटमेंट की विस्कोसिटी बिल्कुल आई के साथ रखी जाती है. हम बहुत ज़्यादा विस्कस भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लेस विस्कस भी नहीं कर सकते. हमने विस्कोसिटी को एक नॉर्मल पॉइंट पे रखना है. प्रिपरेशंस करना भी इनका है कि जो ड्रग है आप उसको डिस्पर्स करेंगे किसी ऑप्थेल्मिक बेस के अंदर, और फिर उसको आप मेल्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे और स्टेरलाइज करेंगे, और फिर आप उसको यूज़ कर सकेंगे. कुछ ऑप्थेल्मिक बेसिस हैं जो यूज़ होती हैं, ये जस्ट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने सपोजिटरी बेस की बात की थी. वहाँ पर भी हम बेसिस यूज़ करते थे, यहाँ पर भी ऑइंटमेंट में हम बेसिस कुछ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका ड्रग किसी भी व्हीकल में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हमें ये बेसिस यूज़ करनी है. कौन कौन सी बेसिस हैं? लिक्विड पैराफिन है, वूल या फैट है, येलो सोप पैराफिन है, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जेली. सो ये सब यूज़ होती हैं. सो ये एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ हो जाती है, ये आपके आई को मॉइस्चराइज करती हैं. और इसके साथ ही ये होता है कि ये जैसे ही आप अपनी आई में इंस्टॉल्ड करेंगे तो ये मेल्ट हो जाता है. ठीक है, आपकी आई का जो टेम्परेचर है वो अबाउट 38 होता है. सो आई में जाते ही ये मेल्ट हो जाएंगे, एक पूरी फ्रीम सी लेयर आपकी आई के ऊपर बना देंगे. यूजेस यही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इनके अंदर, एंटीसेप्टिक हैं, बाजू का एनेस्थीसिया भी इसके ज़रिए से हम देते हैं. कंटेनर भी सेम होगा, और एग्जांपल आप दे सकते हैं बेटनीसोल आयोनमेंट्स भी है और टेट्रासाइक्लिन आयोनमेंट भी है. इसी के साथ पेट्रोलियम जेली जो है, ये भी अगर टैबलेट्स में बात करें ना, तो पेट्रोलियम जेली कोट एंटी बायोटिक टैबलेट्स को या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स को कोट करने के लिए जो है वो यूज़ करती है, एज अ बेस यूज़ होता है. ठीक है, सो ये हम लोगों ने ऑइंटमेंट्स वगैरह की बात कर ली. अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पे चलते हैं. अच्छा, एडवांटेजेस ये है, दे हैव वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे कि हमने बात की, क्योंकि अब वो सेमी सॉलिड लाइक है. सो एक एक्वस सोल्यूशन का आई से बाहर लॉस हो जाना ये पॉसिबल है, क्योंकि आई जैसे आप ब्लिंक करेंगे तो जिस तरह से टेयर्स बाहर आ जाते हैं, इसी तरह वही ड्रग भी बाहर आ सकते हैं. लेकिन जब ऑइंटमेंट की आप बात करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड ही और ज़रा सेमी सॉलिड लाइक नेचर के है, तो वो बाहर नहीं आएगा, ड्यूरेशन ज़रा लंबा होगा. लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ ऐसी बेसिस डाली हैं पेट्रोलियम जेली की फॉर्म में,
जो बहुत ज़्यादा आपकी आई को मॉइस्चराइज और लुब्रिकेट कर देती हैं। नॉट डिग्रेडेड ऑन स्टोरेज, जिस तरह हमने बात की कि सस्पेंशन जो है वो स्टोरेज पे डिग्रेड हो जाता है, आप उसको स्टोर करेंगे उसके पार्टिकल्स को ओकुलेट कर जाएंगे। जब आप बात करते हैं इन ऑइंटमेंट्स की, तो इनके अंदर कोई भी पार्टिकल क्योंकि नहीं है, तो इस वजह से ये स्टोरेज पे डिग्रेड नहीं होंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये ब्लरिड विजन कॉज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे आप डालेंगे जैसे लोशन ना, सो आई के ऊपर एक पतली सी लेयर सी बना देती हैं, जिसकी वजह से आपको धुंधला नज़र आता है कुछ देर के लिए, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके बाद डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर है, ज़ाहिर बात है लोशन की फॉर्म में, सो आई में बाजू का ये इरिटेट भी कर देता है। चौथी प्रिपरेशन है ऑर्नामेंट इंसर्ट्स। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। प्रैक्टिस से यूजेस ये सब कुछ सेम होगा जैसे पहले हमने किया। एग्जांपल्स पाइलोकार्पिन इंसर्ट्स यूज़ होते हैं। पाइलोकार्पिन आपकी आई को मिड्रोसिस करवाने के लिए, आई के प्यूपल को डायलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। ड्यूरेशन इनका बहुत लॉन्ग है और मेडिकामेंट के लॉस होने के चांसेस भी कम है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना डिफ़िकल्ट है और बिल्कुल ब्लरिड विजन कॉज कर सकते हैं। सो इनकी बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे हमने ऑइंटमेंट का बात की है। जस्ट डिफरेंट क्या है कि ऑइंटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सेमी सॉलिड और ज़रा वैक्सी नेचर के हो जाते हैं, और जो ये इंसर्ट्स हैं ये सॉलिड नेचर के भी हो सकते हैं और सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन। ये तो आपको पता है कि सोल्यूशन जो आपके क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं आपके स्टोर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज को। सो ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज दो हैं, वेटिंग सोल्यूशन और स्टोरेज सोल्यूशन। एक होता है वेटिंग सोल्यूशन, जिसको आप जब कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आई में डालते हैं तो उसी के साथ ही आप उन स्प्रेज को अपनी आई में उन ड्रॉप्स को डालते हैं, ठीक है। सो ये आई में लेंस डालने से पहले ही ये किया जाता है। ये इसका यूज़ क्या होता है, जस्ट ये आपकी आई की सरफेस को मॉइस्चराइज कर देता है और लेंस की सरफेस को भी इसी तरह मॉइस्चराइज कर देता है, ताकि दोनों में दोनों आपस में, एक तो ये है कि लेंस आई बॉल के ऊपर चिपक जाए, दूसरा ये है कि वो इरिटेशन ना करे और मॉइस्चर हो जाए, क्योंकि आपकी आई जो है वो ख़ास तौर पे विंटर्स में ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि वो लैक्रिमल सिक्रेशन नहीं हो पा रही होती है। सो इस वजह से कि अगर आपकी आई ड्राई भी है तो वो सोल्यूशन उसको ठीक कर देगा। और दूसरा इसका पर्पज़ ये होता है कि क्लीन कर दे आपकी आई को, क्योंकि आपकी आई के अंदर बैक्टीरिया वगैरह अगर होंगे तो वो लेंस के साथ ऐसा वो ना कर दे, तो इस वजह से आई को वॉश भी ये कर देते हैं, ठीक है। सो मेक द लेंस हाइड्रोफिलिक, सो लेंस को भी वाटर अट्रैक्टिव बना देता है ताकि वो आई बॉल के साथ चिपक सके। दूसरा सोल्यूशन होता है स्टोरेज सोल्यूशन, यानी आपने लेंस यूज़ कर लिया, अब आपने उसको पुट करना होता है वापसी एक सोल्यूशन में पुट करके रखते हैं ओवरनाइट, ताकि वो क्लीन रहे और सूख रहे, ठीक है, उस पानी के अंदर। सो इस उस पानी को हमें हर हफ्तों के बाद, एक हफ्ते बाद चेंज करना होता है। वैसे तो ये है कि फ़्यू डेज़ के बाद भी चेंज करें, बट आप 1 वीक के बाद मैक्सिमम जो है वो आपको चेंज कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम्पल कंफर्टेबल आई ड्रॉप्स के नाम से एक कंपनी है जो आई कॉन्टैक्ट लेंसेज़ दे रही है। एडवांटेज क्या, ईज़ी टू यूज़, क्लीन वगैरह कर देता है आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज़ को भी और आपकी आई को भी। डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, आपकी आई में इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और इनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको स्टोरेज सॉल्यूशन को रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो एक माइक्रोब्स का स्टोरेज बन जाएगा, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके लेंस सब कुछ ख़राब हो सकता है। सो इस वजह से इनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर पेशेंट जो है वो रिप्लेस करना, सॉल्यूशन चेंज करना भूल जाता है तो उसके लेंस ख़राब हो जाते हैं। सो ये थी हम आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस पे बात की। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा इसी तरह के वीडियोस फार्मेसी के लेक्चर्स के रिलेटेड अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आपका है कोई भी लेक्चर, तो आप मुझसे मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।